very good evening to all. Today, as you can see, we are going to find out the area of parallelogram. In this video, we will study how to calculate area of parallelogram and how to calculate its height and base or its diagonal if the area are given. Okay, according to some questions, I will explain these three concepts. Area of parallelogram equals to base into height. What is base and what is height? Base always is this और this. मतलब ये है कि आप जो साइड होगी पैरेललोग्राम की उसको एक जो लार्ज वाली है मीन्स जिसको हम लेंथ कहते हैं या तो आप उसको बेस ले लेंगे या फिर आप जो स्मॉल वाली साइड होती है जिसको हम ब्रेथ कहते हैं उसको बेस ले लेंगे. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? दोनों से एरिया सेम ही आता है बिकॉज एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस फिगर. अगर हम देखें तो एक फिगर इतना ही स्पेस ऑक्यूपाइड करती है चाहे हम कैलकुलेट करने का ये मेथड यूज़ कर लें या फिर ये यूज़ कर लें. नाउ व्हाट इज़ एच हाइट? हाइट क्या है हमारी? फॉर बेस 1 दिस इज़ हाइट. इसको मैं हाइट 1 लूँगी एंड फॉर दिस इज हाइट 2. इस बेस के लिए ये हाइट है. हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिस. ठीक है. सो इस बेस से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और इस बेस से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. ओके. सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ऐसे हम एरिया पैरेललोग्राम का कर सकते हैं. अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि हमने इस साइड ही क्यों लिया इस साइड क्यों नहीं लिया तो वी कैन डू दैट ऑल्सो. हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और बेस ये दोनों सेम ही होते हैं तो हम बेस इसको भी ले सकते हैं. सिमिलरली लेंथ इज़ बेस ये ना लेकर हम ये वाला ले सकते हैं और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. इन सम केसेस यू विल नॉट फाइंड एनी परपेंडिकुलर इनसाइड द पैरेललोग्राम. कभी कभी आपको कहा जाता है कि अंदर नहीं आप बाहर ड्रॉ करो. देन यू हैव टू ड्रॉ हाइट हेयर. फिर आपको यहाँ हाइट बनानी होगी परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाना होगा अगर आउटसाइड का केस हो तो. बट एज यू कैन सी दीज आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट सो दीज विल बी इक्वल. हाइट 1 जो है हरदम इस जो अगर मैं इसको हाइट 2 लेती हूँ तो हाइट 2 के इक्वल होगी. और अगर यहाँ से भी हमें कोई और परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना हो एक्सटेंड कर तो इन दोनों की भी हाइट सेम होगी मतलब लेंथ सेम होगी हाइट की. ओके. अब हम यहाँ पर चलते हैं. सेकेंड फार्मूला इज हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो हाफ इंटू D1 मीन्स डायगनल 1 एंड D2 मीन्स डायगनल 2. सो दिस इज अनदर फार्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो आपको एक डायगनल दो डायगनल दोनों को मल्टीप्लाई करना है देन मल्टीप्लाई इट बाय हाफ. फिर उसका हाफ कर देना है. ओके. सो D1 stands for diagonal 1 and D2 stands for diagonal 2. Now let us do some question. Find the area of parallelogram with the base 4 cm and height 5 cm. मैं अभी हाइट और बेस का मैंने क्वेश्चन लिया है. सो एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट राइट व्हाट इज़ गिवन. गिवन जो होता है पहले आप वो राइट डाउन करेंगे. गिवन क्या है यहाँ पर आपके पास? यू हैव गिवन बेस of parallelogram and that is 4 cm. Then height equals to 5 cm. Now we are going to calculate the area and area is base into height. So how you will write it? अब मैं अगर एरिया कैलकुलेट करूँ so 4 into 5 square centimeter. Okay. So here you can see 20 is your area. Area क्या लिए आया 20. This is the very simple question and you can understand it very easily. If I will change it, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ और मैं 4 की जगह मीन्स बेस में चेंज कर रही हूँ. Now I am taking base as 16 centimeter and height. अब मैं हाइट को भी चेंज कर देती हूँ. Height equals to 12 centimeter. Now calculate this answer and send its answer to me. Okay. आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आप इसका आंसर मेरे पास सेंड करेंगे. ओके. Now
I'm taking another question, and the question is the area of a parallelogram is 500 square meter. Its height is 25 meter. Find its base. Now you have to calculate its base. Its height is 25 meter and the area is 500 square meter. Now we will use the same formula to calculate this. Area equals to, because we have given base and height, we are using this formula. If we will find diagonals, then we will choose the diagonal formula. Now area equals to base into height, and we don't have value of base, so we will write it as b, and the height is 25 and the area is 500, as you can see here, 500 square meter. 500 square meter. Now you have to calculate base. What you will do, as we studied in algebraic expression and linear equations, if we have to find out the value of any variable, then we have to interchange the positions, or we have to transpose other rest things towards different another side. दूसरी साइड हमें भेजना होता है. सो 500 अपॉन एक्स्ट्रा चीज़ क्या है 25 इक्वल्स टू बी. And your answer is base equals to how many meters? 20 meters. Okay, so this is your answer, and you can conclude it by writing a line. Therefore, the base of the given parallelogram is 20 meter. Okay, this is how you will calculate base, either base or height. If height is not given, then you have to use the same formula and you have to use the same method. Like if I will take here height 10, base 10 and we have to find out height. In the same case, अगर मैं ऐसा करती हूँ 500 हो और ये हमें given हो, दिस इज बेस एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाइट, और हाइट निकालना हो तो भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे. 500 अपॉन 10 इक्वल्स टू हाइट, एंड हेयर यू विल गेट द हाइट इक्वल्स टू 50 मीटर. ओके, ईदर हाइट और बेस इज गिवन, then another dimension you can calculate by the same formula, same method. Okay, now I am taking one another question. The base of a parallelogram is 3 times the height and the area is 147. अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो बेस है, बेस इज 3 टाइम्स द हाइट. बेस जो है, बेस क्या है, 3 टाइम्स है हाइट का. सो इफ़ आई विल टेक बेस एज एक्स, अगर मैं एक्स को बेस ले लूँ, ठीक है, बेस मैंने एक्स ले लिया, तो फिर अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं बेस को, लेट द बेस बी एक्स, द बेस एक्स मैंने ले लिया इसको, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ बेस के रेस्पेक्ट में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि हाइट जो है दैट इज़ 1/3 ऑफ बेस. बेस का 1/3 है. भाई क्या कर रहे हैं हम, हाइट को 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और अनदर साइड इट विल गो इन डिवाइड में ले जाएंगे. तो ये हमारा हो गया हाइट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बेस. सो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ कि हाइट क्या आ जाएगी, अगर बेस एक्स है, सो हाइट क्या आ जाएगी 1/3 ऑफ एक्स. ओके, और यू कैन सिंपली टेक हाइट, आप ये भी कर सकते हैं, हाइट को एच एज्यूम कर सकते हैं, और अगर आपने हाइट एच एज्यूम कर ली है, सो बेस क्या हो जाएगा 3h, बेस 3h और हाइट h. अब मैं ये दोनों तरह से आपको करके दिखाऊंगी. नाउ व्हाट विल बी द एरिया. एरिया के फॉर्मूले में अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो बेस इंटू हाइट होता है हमारा, और अगर इफ़ आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट पार्ट कि हमने एच लिया है जो, सो बेस की वैल्यू कितनी है 3h है, और हाइट कितनी है आपकी h है. सो दिस विल बी 3h स्क्वायर. 3h स्क्वायर हो जाएगी, एंड द एरिया इज़ 147 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो 147 मीटर. नाउ 147 डिवाइडेड बाय 3,
and you will get 49 equals to h square. Now this is square of which number, as we have to transfer the square and it will become under root here. So height will be 7 because this is square of 7. So your height equals to 7 meter. Now from another method which we have taken here, जो हमने यहाँ लिया था कि बेस x है और हाइट ये हो जाएगी 1/3x. Okay, so area is 147. Area equals to base into height, and base is x and height is 1/3 of x. Okay, now you can see here x square upon 3, 147 एंड दिस इज़ 441. और 441 किसका होता है? 21 का. तो हमारा बेस कितना आ गया? 21. और अब हमारी हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है, सो बेस है 21 और हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 7. ओके, और अगर यहाँ हमारी हाइट आ गई थी और हमें बेस कैलकुलेट करना होगा तो बेस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस. सो बेस विल बी 3 टाइम्स ऑफ हाइट. तो क्या हो गया हमारा? 3 into 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट बोथ द डायमेंशंस. नाउ यू कैन सी इस मेथड से भी आपका 7 हाइट आई है और बेस 21 आया, और इस वाले मेथड से भी आपका बेस 21 और हाइट, बिकॉज एक्स इज आवर बेस, ठीक है, और हाइट हमारी कितनी आई है? 7 मीटर आई है. ओके, this is how you can calculate these kind of questions. The formula is same and we have done 3 parts, 3 questions of different types. Now here I am taking another question. If diagonal of a parallelograms are 12 and 13, एक diagonal 12 है, एक 13 है, and our formula as we know is half of diagonal 1 into diagonal 2. So how we will calculate area? एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2. सो d1 इज 12 एंड d2 इज 13. ओके, एंड 13 6 यस, कितना आया? 78. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट डायगोनल वाइज, डायगोनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. जिसमें डायगोनल दी हो वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ इफ आई विल टेक अनदर क्वेश्चन, d1 इक्वल्स टू 20 एंड d2 इक्वल्स टू 13. व्हाट विल बी योर आंसर? थिंक ओवर इट. थोड़ा सोचो क्या आएगा. डायगोनल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. d1 और d2 की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड you will get your answer as 130 meters square. Okay, now practice more to get the concept. If the area of parallelogram is given, अगर area आपको parallelogram का given है, suppose it is 120 meter square. ओके, अगर आपको एरिया पैरेललोग्राम का गिवन है, d1 गिवन है, यू हैव गिवन d1 एज 12, d1 12 मीटर गिवन है. व्हाट विल बी योर d2? d2 कितनी होगी? हाउ टू कैलकुलेट विद दिस फार्मूला. इस फार्मूला से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ इंटू d1 इंटू d2. हेयर यू कैन सी एरिया दैट इज 120 and half into d1 is given 12 and we have to calculate d2. Now you can see, now what is extra other than d2? We have to shift it here. हम इसको यहाँ ले आएंगे. यहाँ मल्टीप्लाई में है, here it will come in डिवाइड. डिवाइड में चली जाएगी and your answer will be 20.
So d2 equals to 20. If you want to verify your answer, then multiply them. 12 into 20 and take half of it. Okay, so what will be your answer? 240 upon 2, and that will be equals to 120 meters square. This is how you can verify your answer. Okay, you will get the same area. Thank you, students. In next video we will discuss square and their area, rectangle and their areas.